We are already late by 10 minutes. So now I'm going to start directly with question answer session because we left with only 2 days to finish our targets. So here we are going to start with the last question where I left you, that is accounting standard 20, one important question for diluted EPS. Okay. So here first, students, what we have to do, first we have to calculate for individual security. Okay, what I have done, I mixed two securities and then we have given a ranking. So instead of that, what we are going to do, we will do for individual, okay, only individual potential equity shares, we are going to do the ranking. Correct? So how to do individual security ranking? Yes, now let's understand in the same question. See, I will read question for you one more time. From the following information of Banu Limited, determine the order in which dilutive potential equity shares should be considered. Net profit available to equity shareholder 1 crore 50 lakhs divided by 25 lakhs. That is 6 rupees per share is a basic EPS that we have already calculated. Average fair value of one equity share is rupees 100 and options 1,20,000 equity shares with exercise price of rupees 75 per share. Of rupees 75 per share. So students, now we'll do for diluted EPS for options without considering basic calculation. Okay, so you have to understand over here diluted EPS how I'm going to calculate only for warrants now, ESOP. Whether ESOP will give you some extra earning? No, definitely not. To zero. And options calculation 1,20,000 into 75 divided by 100. You know the calculation 90,000 and 90,000 means extra 30,000. So your warrants are giving you zero EPS. If you issue warrant, your EPS will be zero because it does not increase any net profit because it is considered as a part of your basic earnings. Okay. Next one, convertible debentures. Now for convertible debentures, tell me your convertible debentures, convertible preference shares. Sorry, it's a mistake. Convertible preference shares. Due to convertible preference shares, what you are going to save in future, you don't have to pay preference dividend. So what is the preference dividend amount in this question? 10 lakh shares into 8.8. That is, we have already calculated 88 lakhs. We already calculated 88 lakhs. And how many equity shares are going to convert it for? 10 lakhs into 4. So that is rupees 2.2 per share. Okay. And last, debentures. In case of debentures, you are going to save your interest. But interest is not, interest is tax deductible. But when it is converted into profit, it is not tax deductible. So 12 lakhs into 100 into 15%. So here it is 1 crore 26 lakhs after deducting tax and divided by number of debentures we are converting 12 lakhs into 2, 24 lakhs. So 5.25 per share. Now what is the ranking? Ranking is 0, number 1, preference shares number 2 and convertible debentures is number 3. So our sequence after that, if only warrant is there, 5.93 will be the final answer. That is dilutive. Okay. Then we will consider warrant plus preference shares. So warrant plus preference shares will give you answer 3.64. But warrant plus preference shares plus debentures will give you answer 4.08. Now your earning is increasing. So we won't consider 4.08, but we will consider final answer as 3.64 per share. We will stop. See, first we'll do for ranking for individual
security, and then we will add it with warrant, then warrant plus preference shares, and then last one is a warrant plus preference shares plus debentures. But that will give you the answer anti-dilutive, and we won't consider it in this. Any difficulty, you can raise your hand. So this is the correct calculation. If you want to take screenshots, you can take. Screenshot 1 of the day. Screenshot 2 and screenshot 3. It is very simple question now. Now many students, they haven't understood the paragraph of dilutive. Now I hope ki dilution, it is very simple. When all options are together, we'll do for individual option potential equity shares, not options, potential equity shares for individual potential equity shares, and then after giving ranking, first ranking number 1 we will consider with basic earnings, then ranking number 2 plus ranking number 1, and then ranking number 3 plus 2 plus 1 and basic. So this is how you are going to calculate it. अमन बेटा समझ में आया? यस सर, एक छोटा सा डाउट है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया ना कि एंटी डाइल्यूटिव हो गया 4.08 पर शेयर, यस, सर वो एंटी डाइल्यूटिव कैसे है? एंटी डायलूटिव इसलिए क्योंकि 3.64 का इंक्रीज होके बता रहे हो ना। आप किसी को नहीं वो चीजें मत बताओ। आप डायल्यूटिव मतलब क्या, जब कम हो रहा है तब तक बताओ। 5.93 का नीचे आया, ठीक है, पर 3.64 से ऊपर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, फिर आप ईपीएस जो है ना, सामने वाले की इनकम बढ़ रही है, ये आपको उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ वाली चीज उसको बता रहे हो। ओके सर, अगर 3.64 से वो कम होता तो अभी हम रिकॉर्ड कर तो सकते थे वो भी उसको, राइट? बता देता है, वो 3.64 से और कम हुआ रहता तो बताते थे आप। ओके सर, और सर ये चैट डिसेबल है मीटिंग का, एक बार वो आप चेक कर लो। निसर्ग चैट एनेबल कर दो। ओके सर, गॉट इट, एवरीथिंग राइट। अभी भी कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटेगरीज चालू थी हमारी। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड? क्वेश्चन 6 and 8 we have completed. Similar categories we have completed. Type number 2 over, type 3 over, type ESOP भी हो गया था। Type 4 diluted EPS plus additional questions we have completed. 6 and 8. 9 number is remaining. कौन से रह गए थे? Only 9 and 5. Only 9 and 5 ना, correct? Yes, अभिषा। Thank you बेटा। चलो, टिकटिकी जी को बुला लेता हूँ।
As 1st April 2016, a company had 6 lakhs equity shares of 10 each, rupees 5 paid up by all shareholders. Okay. On 1st September 2016, the remaining 5 was called up and paid by the all shareholders except one shareholder, 60,000. The net profit for the year 21 lakh 96,000 after considering the dividend on preference shares and any dividend distribution tax, 3 lakh 40,000. Okay. Compute basic EPS for the year ended 2017 as per accounting standard 20 earning per share. Okay. So see, on 6 lakhs equity shares, I paid 5 rupees. I got 5 rupees out of 10 for here 1st April to 1st September. Okay. So 5 by 12. Then after that, my shares are getting converted into 5 lakh 40,000 into 10 by 10 because they paid full amount for next 7 months. But on 60,000 shares, they haven't paid last amount. So 5 by 10 for 7 months. Okay. So for 7 months, so we have to consider cumulative number of shares. So I will consider date, number of equity shares, then period and computation last 1st April 6 lakh shares, number of months up to next transaction, 5 months. And here I will do the calculation 6 lakhs 5 by 10 into 5 by 12. Up to 31st March. And on 60,000 shares, into 7 by 12. 5 by 10 into 7 by 12. 6 lakhs divided by 2 into 5 by 12. 1 lakh 25,000. Three lakh 15,000. 17,500. 4 lakh 57. 500. And my basic EPS will be 21 lakh 96,000. No? Huh. 4.8. 4 minute 43 seconds. 4 minute 43 seconds. Or 5 minutes. You can take 5 minutes. Exam question 5 minutes. I think this question is similar to module question.
Easy था. So this is type number 5, partly paid share. Partly paid share. 9 number. Last question है. If still you are finding any question is difficult, and I want after every accounting standard your feedback. Feedback means here only how you feel about this accounting standard, whether it's difficult or easy, that you have to tell me at the end of the every accounting standard. Okay. Chaliye. So 9 number, and now you have a list of all these accounting standards also, type wise, beta, type wise. So I hope you will write types also. I will make a summary at the end. Okay, don't worry. I will make a summary at the end for every accounting standard. We'll do for maximum accounting standard because I left with only 2 days. तो जितना भी पॉसिबल है मैं उतना कवर करता हूँ. ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आर नॉट पॉसिबल. जितना भी हो सकता है हम लोग देखते हैं. नैट अ लिस्टेड कंपनी. They have 10 lakhs equity shares, 10 lakhs preference shares. Okay. During 2021-22, net profit after tax 90 lakhs. On 1st January 2022, NAT Limited means in the same year they issued bonus shares. One equity shares for every two equity shares. For every two equity shares. One equity share for two equity shares. तो कितने हो जाएंगे बेटा? 5 lakhs. 5 lakhs इक्विटी शेयर्स. एक ही मिनट ना बेटा. एक बच्चा बोल रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है बुकलेट फॉर पास्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन बुकलेट इज अवेलेबल ना. कोई तो है, एक ने पूछा है. प्रियांशी ताक ने. ओनली क्वेश्चन बुकलेट चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना. पूरा क्वेश्चन बुकलेट है. ओके, भेज देंगे. ओके. वन इक्विटी शेयर्स फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स. 50 लाख नहीं बेटा, अमन 50 लाख कहां से आया बेटा? 10 lakhs का हाफ हो जाएगा ना. ऑन 1st January 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 22. On the same day, they issued 2 lakh equity shares for rupee 1. Market price is 7.6. That is, we are not concerned for that. Okay. नैट लिमिटेड का शेयर 8.05 पे ट्रेडिंग हो रहा था. फर्दर इट हैड बीन प्रोवाइडेड दैट बेसिक अर्निंग फॉर द प्रीवियस ईयर 62.3. That we have to adjust. Okay. That we have to adjust. चलिए. सो सबसे पहले तो लिखता हूं. एक मिनट. सॉरी, I have not started that tick ticky G. 1 minute extra. Okay, so because for question we want 1 minute extra. Chalo, start. Basic EPS 2021-22. What is the
Amount 90 lakhs. This is net profit minus preference dividend. Preference dividend is 8 lakhs. Divide by Wayne's. Now Wayne's calculation beta 10 lakhs as it is plus 5 lakhs as it is plus extra 2 lakh shares on 1st January. So instead of doing that product calculation and all, we'll take directly 3 by 12. 2 lakhs into 3 by 12. So your calculation will be 81 lakhs plus 50,000. 15 lakh 50,000. Correct? 5.82 lakhs. Sorry. 82 lakhs. 5.29 per share. 2020-21 basic EPS. Now your earnings will be 62.3 into 10 lakh shares. That is your earnings divided by 10 lakhs. So 62 lakh 30,000 basic and adjusted. Why adjusted EPS? Because at the time of calculation of bonus shares, we need to calculate it divided by 15 lakhs. And in bonus shares, we don't consider time weighing factor. So this is 4.15 per share. Sorry, 62.3 divided by 10 lakhs. So 6 crore 23 lakhs. Sorry, it's my mistake. 6 crore 23 lakhs. And 6 crore 23 lakhs divided by this, it will give you 51, 41.53. So first question, explain the bonus issue and market price is treated as differently. Why bonus issue and market price are considered? And shares issued at full market price is treated as differently in calculation of basic earning per share. Okay, write down the answer. In case of bonus shares, equity shares are issued for no additional consideration. Therefore, the issue is considered as if shares were issued at the beginning of the year.
Therefore, wait or holding period is equal to holding period is equal to 12 months. 7 minutes for this question. 7 minutes for this question. 5 marks का क्वेश्चन है. 7 minutes. And this is type number 6. Bonus shares. Bonus shares. Type 6 bonus shares. Yes, now we have completed all questions of S20. If you have any doubt, you can ask me. Now you have answers also of every accounting standard. Priyanka, can you give all types on group? Okay, you will give it after class. एक बार अपना हाँ. निसर्ग, आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप. अजित सर, आर यू देयर? अजित सर, निसर्ग, व्हाट्सएप का लिंक नहीं है. ठीक है. एनीवन हैज लिंक जो इधर चैट सेक्शन में बता सकता है मुझे? ठीक है. आफ्टर क्लास प्लीज शेयर इट ऑन ग्रुप. अच्छा, ठीक है. रेज योर हैंड. S20 का थोड़ा सा फीडबैक दीजिए. कैसा था ये? इजी था, नहीं था, डिफिकल्ट, और ऑल क्वेश्चंस आर सिंपल? यस राजवीर, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट गया था आपको? यस सर, गुड राजवीर, मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट गया था बेटा आपको? सर वो यस गुड मॉर्निंग सर. वो पहले पहले डाइल्यूटेड ईपीएस, वो जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वाले थे, डिवेंचर्स हाँ. वाले, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट पहले होते थे पर अभी क्लियर हो गया है. और आपको इतना समझ में आया कि जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो इट इज वेरी सिंपल चैप्टर यस सर. यदि हमारे कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर. अच्छा. और यस. ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर. हाउ मेनी टाइप्स हमने देखे बेटा इसमें? 6 टाइप देते. 6 टाइप्स देखे थे. ओके. चलिए, तो आप मुझे बताइए अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? सर AS20 तो पीवाई के इतने ही थे ना, तो भी AS19 से ज्यादा. ओके. ओके. तो 19 करना है क्या 10 करना है पहले? सर पहले 10 कर लेते थोड़ा सा. थोड़ा सा ट्रिकी है 10. नहीं नहीं, 19 ज्यादा. AS10 से थोड़ा सा ट्रिकी है पर AS10 इजी है. फिर S10 कर लेते क्या पहले? यस सर.
यस। अमन बेटा, इजी था यस ये, सर। आ जाएगा ये आपको। यस सर, इजी था। मैंने आपके साथ सब्सिक्वेंट सॉल्व भी कर रखा है, और भी सब जो आपने कराया। ओके। एज 10 के क्वेश्चंस आपने, बाकी के होमवर्क के क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए? जो ईपीएस के थे और सेगमेंट रिपोर्टिंग और एस 24 के थे, वो सब मैंने कर लिया है। और हाँ। लीजेस के रह गए हैं। लीजेस के बस मैंने वो मॉड्यूल से थोड़ा इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू कर लिया, और पीपीई का भी इलस्ट्रेशंस को ही गो थ्रू किया, ताकि बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रिवाइज हो जाए। अभी बस आपके साथ कर लूँगा। वेरी गुड। देखो बेटा, आई विल नॉट बी देयर फॉर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरा नया स्केड्यूल मुझे मिला नहीं है अभी तक। बट आई विल ज्वाइन आफ्टर, मतलब ज्वाइन ऐसा नहीं, बट माई क्लासेस विल बी अगेन, वी विल स्टार्ट आफ्टर, यू नो, सर कंसोलिडेशन पढ़ा देंगे, 5-6 स्टैंडर्ड पढ़ा देंगे। आई थिंक सो। और उसके बाद सर के बाद वापस से मैं ज्वाइन करूंगा। यस। सर अभी अपडेट नहीं हुआ है उस पे, साइट पे, कि किसके अपडेट नहीं शेड्यूल। हुआ है, ये देखो, ये व्हाट्सएप का ग्रुप, इस पे ज्वाइन हो जाओ ना। हाँ, कैसे भेजेगा? ये कॉपी कर लो ना, ये किधर, तो मेल कर दो अपने आप। ये लीजिए। एक ही मिनट, बेटा। अच्छा, विल गिव यू टेक्निक, एक मिनट, हाँ सिर्फ। हाँ जी। चलो। देखो, वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, तो एक तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करना ही करना। फर्स्ट यू रेफर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। सेकंड, यू डू क्वेश्चंस जो मैंने पास्ट एग्जामिनेशन भी दिए हैं। एंड थर्ड वन, मॉक टेस्ट, आरटीपी, जितना भी हो सकता है। एंड देन इफ यू थिंक एनी रेफरेंस बुक इज अ लास्ट ऑप्शन, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत से क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, अपडेटेड नहीं रहते रेफरेंस बुक फॉर एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग एफएम के रेफरेंस बुक। बट सी, इतना करने के बाद भी इफ सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम, तो मुझे लगता है यू कैन अप्लाई कॉमन सेंस, यू नो ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ स्टडी मटेरियल, तो यू कैन अप्लाई दैट, और आपको फिर भी बहुत अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर बेटा कॉमन सेंस अप्लाई करके यू कैन डू दैट। तो देखिए, और पिछला पेपर तो वाज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू लास्ट 4-5 एग्जाम्स। तो मुझे तो बहुत ही इजी लगा लास्ट 4-5 एग्जाम से। इस बार का पेपर May 25 का, सितंबर भी शायद से इजी निकले, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वापस से इजी हो गया है लास्ट 2-3, इसमें जो डिफिकल्ट लेवल था। बट नाउ आई थिंक इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, एटलीस्ट 50-60 मार्क्स के क्वेश्चंस, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर देयर। तो आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड लिस्ट फॉर माय टॉपिक्स। ओके, एक्स्ट्रा टॉपिक्स का मैंने लिंक नहीं भेजा हुआ है, बट माय टॉपिक्स यस। एंड आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, अजीत सर को मैंने, आपको, आप लोग मेल नहीं करते हो, आप अजीत सर को पर्सनल इस पे भी भेज सकते हो, तो अजीत सर कैन गिव इट इन दी मीन्स। लास्ट टाइम आपने, किसी ने, प्रियंका मुझे बता रही थी कि बार बार फैकल्टी चेंज होने से, तो आपको एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स बेटा, वो कब होंगे, तो वो लास्ट मंथ में होते हैं, एग्जाम के 1.5 महीना पहले चालू हो जाते हैं सौम्या। तो प्लीज गिव प्रॉपर फीडबैक्स, तो अगले बैचेस के लिए दे विल कीप गुड फैकल्टीज जिनके साथ आपका रैपो मैच हो रहा है। फॉर एवरी सब्जेक्ट यू कैन सजेस्ट कि आप रेटिंग्स रहते हैं हर फैकल्टी के, तो यू कैन गिव दैट। तो उतना अपने सजेशंस दिए, तो वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। और हम लोग उसी के लिए ये देख रहे हैं कि आप लोगों का ग्रुप ही इसीलिए बनाया था, बट कोई भी फैकल्टी हर्ट हो ऐसा ना करना है उसमें। ओके, यू वांट मैक्सिमम सब टॉपिक्स, ये जो भी रहेगा तो आप लोग वहां पे बोल सकते हो। नहीं, मेल भी कीजिए बेटा,
गूगल फॉर्म पे तो भरिए, मेल भी कीजिए। अजीत सर को पर्सनल मैसेज भी आप लोग कर सकते हो, डोंट वरी, वो अवेलेबल है आपके लिए। तो वो खुद बोलते कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आते, जो भी डाउट्स होंगे आपके, लगता है आपको कुछ रिलेटेड टू आईसीआई। हाँ, सब्जेक्ट वाइज का अभी तक हमने टीचर्स को ऐड नहीं किया है, बट वी विल गिव यू वेबिनार्स ऑल्सो। वेबिनार में वी विल डू द रिविजन्स, क्विक रिविजन्स ऑफ ऑल टॉपिक्स। तो वो भी एक होने वाले हैं वेबिनार्स। तो आईसीआई आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। ओके, तो देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एंड यूर दैट प्रॉब्लम कि 6 आवर्स 9 आवर्स क्लासेस, तो वो भी थोड़ा सा उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। तो वो भी बात है। तो आप लोग सिर्फ फीडबैक देते नहीं हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाते हैं। यस, ठीक है। तो ये पास्ट क्वेश्चंस एंड, हाँ, इफ यू वांट कि आपके नंबर ऑफ आवर्स कोई लेक्चर के कम हो रहे हैं, या डू यू थिंक कि ये फैकल्टी ने ये टॉपिक का प्रैक्टिस और ज्यादा लेना चाहिए, तो वो भी अजीत सर को आप लोग मतलब एक इकट्ठा मैसेज करो। एक बार एक स्टूडेंट एक करेगा तो वी आर नॉट टेकिंग इन दैट वे। पर आप लोगों का थोड़ा ग्रुप पे चर्चा हुआ कि भाई ये टॉपिक का थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो रहे, ये ओनली फैकल्टी थ्योरी ले रहा है, प्रॉब्लम्स आर नॉट टेकिंग, तो आप वो सजेशंस दे सकते हो। ओके, तो वो भी सजेशंस हम लोग पॉजिटिवली लेंगे कि आप लोगों को कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट रहेगा कि जिसमें ओनली सम क्वेश्चंस आर टेकन, कि बाबा ये 3 4 क्वेश्चंस, देखो 3 4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वी सॉल्व ऑलमोस्ट 10 15 क्वेश्चंस फॉर एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो सिमिलरली इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, only theory, it doesn't work. Okay, you need proper practice. Conceptual clarity, yes, 100% you want, but the problem is that if you are not doing proper practice, no, तो वो फायदा नहीं होता है। तो वो हम लोगों को चाहिए कि आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ठीक है, एंड डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरी फैकल्टी। ठीक है, हर फैकल्टी इज एन आर्ट, टीचिंग जो है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि संकेत सर जैसे कर रहे हैं या ये फैकल्टी कैसे सिखा रही है वैसे ही अदर फैकल्टीज ने लेना चाहिए। हाँ, वैसा दे विल ऑल्सो ट्राई इट, बट आप सजेशंस तो दो। ओके, ठीक है, चलो अभी आते हैं S10 पे। आ जाओ जल्दी से S10। चलो S10 में आ जाइए। टुडे ओनली दो स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग who have completed their basics, means accounting standard. Those who have already completed basics of all accounting standards, those who have not done this practice, तो वो लोगों ने आज अटेंड नहीं किया है, आज छुट्टी ले लिया। एंड बेटा पास्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। विल डू एटलीस्ट 4 5 क्वेश्चन टाइप वाइज, एंड देन विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक के उस पर वापस से स्टार्ट करेंगे S10। माई टारगेट S10 अप टू 9 5, एंड देन विल मूव टू अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ टाइम परमिट्स। चलिए, अन्ना लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेस अ स्पेसिफिक मशीन installed in 2 months time. Special foundation were required which were prepared within the supply lead time. The cost of site preparation capitalize. These activities are to be supervised by the technical during the entity or who is employed for the purpose. 15,000 per month he is capitalized per month in 2 months time, मतलब into 2 30,000 आएगा। इसलिए 2 months, ये आई थिंक ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। The technical services were given by Department A to Department B, which is billed at the service of 16,500. Okay, so which is 10% profit margin add करके, no, it is not allowed. The machine was purchased at 52,78,000 capitalized. Sales tax is 4% on the invoice. We will, अभी sales tax नहीं है, GST है, and we will assume GST ये is not, credit is not available. 4% जीएसटी है, सेल्स टैक्स नहीं है अभी।
तो ये पुराना क्वेश्चन है 2013. एट द टाइम सेल्स टैक्स वाज देयर 18590. ये 4% वी हैव टू ऐड. ये कैपिटलाइज होगा. 18550 590 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये ऐड होगा. एंड आर्किटेक्ट ₹10,000 फी है, पर मंथ नहीं है, तो ये भी कैपिटलाइज होगा. एंड ऑल्सो इनवॉइस वॉज ड्यू इन 3 months. हाउएवर कंपनी मेड पेमेंट इन सेकंड मंथ. उसके ऊपर बैंक कोडी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. S16 इज नॉट एप्लीकेबल. ओके. तो ये चीजें अपने को याद रखनी है कि कौन सा कैपिटलाइज करना है. सो राइट डाउन. 1 minute. चलिए राइट डाउन. कॉस्ट ऑफ मशीनरी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉम्पुटेशन, रुपीज. नंबर 1, परचेस प्राइस गिवन 52,78,000. Number 2, yes, GST 4% into Roman 1, 2,11,120. Roman 3, site preparation cost. साइट प्रिपरेशन कॉस्ट स्टार्टिंग में दिया था 47,290. रोमन 4, टेक्नीशियन सर्विसेज, सैलरी यू कैन से 15,000 into 2, 30,000. 5, 16,500 तो नहीं, 15,000 प्लस 10%, तो वो नहीं, इग्नोर करना था. वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. देन इग्नोर कर दिया हमने उसको. 15,000 प्लस 10% था वो 16,500. देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन 18,590. And last one, architect fees given 10,000. Cost of plant 1 to 6. ₹55,95,000. Note: interest on bank overdraft is not considered in cost of machinery. Six minutes. 6 minutes for this question. Write down type 1.
कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। और कोई है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9। 11 का 1, 11 भी, 9 11, 9 11 उसमें ही लेता हूं। क्वेश्चन 11। ओके, सो टोटल क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस है। 5। ओके, इन दिस टाइप S10 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो गए क्या? उस ज्वाइन होके क्वेश्चन 10 के पास्ट क्वेश्चंस डाल दो ना ग्रुप पे। हाँ हाँ। अजित सर, आर यू देयर? यस सर। ये S10 के क्वेश्चंस आपको भेजता हूं मैं, आप ग्रुप पे भेज दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, मैं बाद श्योर में सर। इस पे भी अपलोड कर दीजिए। मैं एक श्योर सर। जस्ट भेज देता हूं आपको। Yes. एक ही मिनट है सर। तो अभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, मैं तब तक ब्रेक दे देता हूं उनको। सो 5 क्वेश्चंस दे विल सॉल्व, आप ग्रुप पे भेज दीजिए तब तक। श्योर सर। और जो बच्चों के पास नहीं है अभी, तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर भेज दिया आपको, एक बार व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए आप। सर इंडिया स्टैंड, हाँ, बोले ना सर। इंडिया स्टैंड के क्वेश्चन है। S10 के क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है सर। तब तक आप लोग, और जिनके पास नहीं है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए, सर तो भेज ही रहे, बट दोज हु आर नॉट इन ग्रुप और दे आर वाचिंग लेक्चर आफ्टर दिस, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 5 नंबर कौन से 5, 8 नंबर ले लीजिए। 8, 9, 11, यस, 5 8 9 11। ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। अदर स्टूडेंट्स बेटा, कंप्लीट इट, 5 8 9 11, एंड विल डिस्कस दिस 5 क्वेश्चंस आफ्टर 4 क्वेश्चंस आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक के उस पर बेटा वी विल स्टार्ट विथ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ऑल्सो। बुधवार के सेशन में S1 होगा, और टाइम परमिट किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
past questions. Yes, Nisarg ji. Nisarg. निसर्ग आपको ब्रेक ले लेना है.
चलिए आंसर आ गए क्या बेटा आप लोगों के? चलो वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन 5 का आंसर है 5,42,200। चेक करो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? 5,42,400। प्रियंका क्यों गलत हुआ बेटा आपका? यस प्रियंका, रेज योर हैंड। कहां पे गलत हुआ चेक करो बेटा प्रियंका, कहां पे गलत हुआ बेटा? सर मैंने वो ना 25% ले लिया था, उसमें क्वेश्चन में गिवन था। क्या क्या सर 25? ये वाला पार्ट है ना, टाइम स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25%। तो ये तो ठीक है, 24,000 का 6,000 वो तो बराबर है, पर फिर आपका आपका तो 146,200 आया है, तो आपने 4,80,000 का यस। भी 25% ले लिया क्या? नहीं सर, तो ये तो 440 तो मिनिमम था ही ना। मैंने वही कंसिडर नहीं किया, बाकी सारा ऐड कर लिया था। सॉरी सर, ये मिस्टेक हुई। अरे मेन चीज ही नहीं किया बेटा। यस सर, वही वन गलती लैख हुई है। टू थाउजेंड टू हंड्रेड उसमें भी गलती हुआ है आपका। 146,200 मतलब आपका कितने का डिफरेंस है? 44,000 का डिफरेंस है बेटा आपका। यस सर, मैं देखती हूँ मैंने कहाँ गलती किया है आफ्टर क्लास। कहाँ कहाँ गलती किया देखो, आप लिस्ट बनाए हैं? यस सर। सर मैंने ये लिया है, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ले लिया है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज बेटा ईशान आएगा ना बेटा, वो भी ऐड होगा। डेप्रिसिएशन जो सर मैंने, इंस्टॉलेशन के लिए एसेट है। यस सर। सर 1/10 लिया है इसका, प्लांट इंस्टॉलेशन का एडमिनिस्ट्रेशन देखो एक्सपेंसेस। 4,20,000 ये लिया, 66,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 600 लिया, स्पेयर पार्ट 6,000 लिया, यस सर। इसका 25% लिया, यस सर, इस 6,000। देन 32,000 3,200 लिया, यस सर। 23,000 लिया। यस सर, एंड 9,000 एंड देन 12,000। हाँ और ये नहीं लेना है। यस सर। Why we have taken depreciation नाउ, means suppose if we are using asset construction के लिए one of the asset, any other asset, okay, so that depreciation of any other asset will be considered no beta, if we are using that यस asset सर। for the construction, for example यस सर, में, इसीलिए से कंसिडर किया था। तो बेटा सपोज मैं मेरी गाड़ी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं मेरे घर का एक ब्लोअर यूज कर रहा हूँ, तो वो ब्लोअर जो है उसका डिप्रिसिएशन में गाड़ी के कॉस्ट में ऐड करूंगा ना बेटा। यस सर, वी आर। हाँ, अंडरस्टूड प्रिया मिश्रा? यस, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स भी उसी में ऐड होगा। यस यू आर करेक्ट। यस सर। और एनी अदर डिफिकल्टी? यस, प्रजापति जी, एक मिनट, हाँ इनको कुछ क्वेश्चंस है। प्रजापति जी यस बोलिए। सर। मिसेस प्रजापति, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना आया बेटा? सर 47,85,000, उसमें सर एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं लिया क्योंकि वो 5 years के बाद का दिया हुआ है और हम उसका ऐड करना है, प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। नहीं ऐड ऐड करना करना है सर?
सर जो हमने क्लास में क्वेश्चन लिया था तो हाँ, उसमें बट आपने नाउ बताया इफ था वी कि डू हम उसका नॉट हैव प्रेजेंट वैल्यू। इफ वी डू नॉट हैव प्रेजेंट वैल्यू तो वी कैनॉट कंसिडर दैट, तो आपको लेना पड़ेगा वो भी। यस, यू आर करेक्ट। एक्चुअली मैं नवंबर 2017 में बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं रहता था, बट वी हैव टू कंसिडर दैट। एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू इज तो मिसिंग, सर देयरफॉर वी विल कंसिडर 2,50,000 ओनली। नीचे ठीक है, नोट तो लिख सर इस देंगे, अकॉर्डिंग मेरा नोट ठीक लिख है देंगे। सर 50,35,000। नो, यस सर रॉन्ग। 50,35,000 आए। नहीं ना, 31,25,000, 250 एडेड, यस सर। इनिशियल यस सर ऑपरेटिंग लॉस नॉट 375। एडेड। ऑपरेटिंग सर लॉस ये कहाँ देते बेटा हम लोग? ठीक है सर, इसमें गलत हुआ ये वाला, बाकी तो ऐड कर लिया। डिलीवरी कॉस्ट ऐड किया, साइट प्रिपरेशन यस कॉस्ट सर ऐड साइट किया। और कंसल्टेंट फीस भी ऐड किया। बेटा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस लिख के दिया था मैंने कि एक एग्जाम्पल लिया था। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस मतलब क्या कि वो इमेजी का चालू किया पर सभी राइड्स चालू नहीं किए, तो पहले हमने कुछ राइड्स के लिए किसी को बुलाया, तो हमने पूरे राइड्स ना चालू किए, हमारा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस हुआ। पर एक बार आप लोग चालू कर देते तो वो इग्नोर, लिस्ट में इग्नोर के, एक्सेप्शन के। आप स्टैंडर्ड अभी तक अच्छे से ओके। पढ़े नहीं हो बेटा। आप देखो आपके एक्सक्लूजन लिस्ट में लिखा हुआ है। यस सर, थोड़ा माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं, सॉरी सर। माइनर मिस्टेक किया तो बेटा पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। ये भी गलत हो गया, नहीं दोनों सर। क्वेश्चन गलत हुए। कोई बात नहीं, यस चलो सर, ध्यान में रखो। अभी कौन सा था? 11 क्वेश्चन था सर। ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था ये। यस सर, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1,33,50,000। मतलब सर फर्स्ट का पार्ट है ना, उसमें हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट निकालनी है ना। कौन सा बोल रहे हो, 9 नंबर? नहीं सर, 11 का फर्स्ट नाइन, पार्ट। नाइन नाइन बोल रहा हूं मैं। 9 में तो सर बोथ, 9। यस सर। तो ये दोनों भी, तो दोनों भी आपका ये हो जाएगा ना। सर ये जो हमारा है रिनोवेशन, इसको तो हम सर पैनल में डालेंगे ना, क्योंकि ऐड रिनोवेशन करेंगे। से तो हमें। हाँ। और कंस्ट्रक्शन रिमॉडलिंग से हमारा प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। हाँ, यस सर, ये हो गया। रिनोवेशन एक्सपेंसेस 30 lakhs आप लोग कैपिटलाइज करोगे, एंड सैलरी यस सर 7। रेवेन्यू में ये डाल। 750, ये उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा। ये उसका आंसर है, तो यू कैन टेक। ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। यस सर, नो ये बेटा, ना बोथ हमने आर नॉट, एग्जाम्पल डिस्कस किया। both are not capitalized beta. Both are, how both will be capitalized? Salary for प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट। प्रिपरेशन मतलब वो जो बिफोर ओपनिंग उनको बुला के हमने रेस्टोरेंट को थोड़ा अच्छे से कौन सी जगह पे क्या लगाना है वो लिख कर दिया, तो वो तो पी एंड एल में जाता है ना, वो थोड़ी आपकी फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ाता है। तो सैलरी तो पी एंड एल में नहीं जाएगा। सर, ओनली 30 lakhs विल बी एडेड। करेक्ट। कैपिटलाइज्ड। हाँ, यस सर, करेक्ट। ये स्क्रीनशॉट है, रीड कर लेना एंड ये आंसर। ओके सर। 9 नंबर है। सर स्क्रीनशॉट 4। आज का स्क्रीनशॉट 4 है, चलो ठीक है। डन सर। डन। यस सर, डन। एंड 11 नंबर का क्या आंसर आया? सर पार्ट ए का ना 1,33,50,000 है। चलो फाइनली एक क्वेश्चन बराबर आया आपका। यस सर, और पार्ट बी ना जो अभी हमने 9 किया था ना, उसी की तरह है, बस इसमें हमें एलिमेंट्स को बताना है कि सैलरी टू स्टाफ हम पीएनएल में ट्रांसफर करें क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड कंस्ट्रक्शन एंड रिमॉडलिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि इससे हमारा प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to the enterprise and cost can be measured reliably. ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल में डिस्कस किए हुए हैं ये पॉइंट्स, तो यू कैन रेफर मॉड्यूल Yes sir. क्वेश्चन। Yes sir.
ठीक है. I hope you got the answer now. यस सर, ठीक है. समझ गए. So we have completed 5 5 questions, क्वेश्चन correct? सर. यस. चलिए. ओके बेटा प्रेम. ओके. Now we will move to next question. अच्छा अमन डाउट है. यस बेटा अमन बोलिए. सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट था हमारा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है. सर अगर प्रेजेंट वैल्यू नहीं तो उसको ऐसे नहीं दिया पास हुआ है आउट. तो वी विल कंसिडर ओनली. एंड नीचे नोट लिख देना कि वन मस्ट कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट एज इन द क्वेश्चन इट इज एब्सेंट. सो वी कंसिडर्ड डायरेक्टली 3,50,000. ओके सर. Whatever the amount, I don't know amount, but whatever the amount that you will consider directly. ठीक है. ओके सर. और कोई डिफिकल्टी बेटा? नो डिफिकल्टी. नो सर, बाकी सब कर लिया था मैंने. ओके. यू गॉट द सेम आंसर. यस सर, गॉट द सेम. चलो. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व करेंगे. टाइप नंबर 2. On 1/4/2010, a machine was acquired for 4 lakhs. The machine life is 10 years. मैं इधर ही लिख देता हूं. And residual value 40,000. At the end of the third year, attachment of 1,80,000 means addition. Attachment means addition. The attachment was expected for 10 years, zero value. During the same year time, the original machine was revalued for 90,000 upward and remaining useful life 9 years. अभी क्वेश्चन वापस देखने की जरूरत नहीं है. Attachment retains the separate identity and it is integral part. चलो. So write down for depreciation for that year. Yes. So कौन सा आंसर है? Solution number 2. Write down. Number 1. If attachment retains separate identity, depreciation is equal to depreciation of machinery plus depreciation of attachment. Working note. And depreciation of attachment is 18,000 is equal to. Working note 1. Depreciation of machine. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1. Cost of machine given 4 lakhs less depreciation for 3 years. 1 minus salvage value 40,000 divided by 10 years into 3 years. 3,60,36,000 into 3. 1,08,000.
So 3 years का depreciation will be 1,08,000. Number 3, WDV at the beginning of 4th year, 1 minus 2, 2,92,000. Revalued amount, revaluation given 90,000. Revaluation, WDV after revaluation. $382. Depreciation, Roman 5 divided by 9 years. 42, 444. $60,000, 444. Next, if attachment becomes integral part, बड़ा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इतना टाइम कैसे हो गया भाई? तो मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूड वैल्यू प्लस अटैचमेंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ ओरिजिनल एसेट, remaining life of original asset, revalued amount is 3,82,000 plus attachment is 1,80,000 and original asset की remaining life is reassessed at 9 years. 10 years नहीं लेना है, 7 minutes ही था. ओके, 62,444. ओके, when I started 7 minutes था. ओके, 7 minutes plus 6 minutes में हो गया ये. So this question बेटा 6 minutes का है. तो your answer will be 3,82,000 plus 1,80,000 divided by 9 years. Type 2, additions. Additions, treatment. उसमें 2 पार्ट, separate identity and integral. Integral. Type number 2, addition statement, separate identity or integral. 62,444 या 60,444. Okay, so we'll keep separately or we will keep, if it is integral part तो किसका आंसर लेंगे? Life of original asset. Life of original asset. Understood the concept, every one of you? ऐसे टाइप का क्वेश्चन है क्या? देखने दो.
नहीं 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 नो only one type additions over easy move to question number 3 again 5 marks question ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था क्या चेक करो चार्जर दो ना इधर है इधर लगा दो हाँ ठीक है चलो in the books of optic fiber plant and machinery stood at 6,32,000 on 1/4/2013 okay however on the scrutiny it was found अरे sorry time लगाना है however on the scrutiny it was found that the value worth rupees 1,20,000 was included in the purchase of 1/6/2013 okay on 30th June 2013 the company disposed a machine having book value of 1,89,000 okay on 1/4/2013 at 1,75,000 ठीक है and in exchange with 2,56,000 the company charges 20% depreciation on WDV ठीक है देखिए इसमें से 1,89,000 का डिस्पोज किया इतना ध्यान में रखो 1,89,000 on 1/4/2013 at 1,75,000 so how many machines are there plant and machinery 1 this is machine 2 1,20,000 which was acquired on 1/6/2013 and 30th June 2013 एक मशीन हमने बदला फॉर 2,56,000 ठीक है चलिए स्टार्ट हाउ मेनी मशीन्स आर देयर पर्टिकुलर्स machine 1 one part is sold and one part is retained okay so do like this machine 2 machine 3 and total so draw like this how many columns so draw it properly opening WDV 1,89,000 and sold for it is 6,32,000 so 632 minus 189 so retained is
4 lakh 6,32,000. Additions. Additions 1,20,000. Correct. And other addition is 2,56,000. So total addition 3,76,000. Machine 2 and machine 3. Less depreciation. Now see, this part is replaced on 30th June. So 1/4 to 30th June. Retain is for full year. 1/4 to 31st March. Machine 2 is acquired on 1st June. 1st June. Correct? 1st June to 31st March. It is retained. And this is acquired on 1st July. 30th June means 1st July to 31st March. So this is for 3 months, 12 months, 10 months, 9 months, and 8 months. June, sorry, my mistake. 10 months and 9 months. Okay, calculate it. So April, May, you won't consider. So 12 में से 2 गए, 10 months, and 1st July. Okay. Date column, if you want, you can add beta, Rohan. Otherwise, no need to add it. So you know already. Otherwise, you can add that date column, and that's therefore beta we have written it date wise. So what is the rate of depreciation? Because only one question is asked, na beta. Only 1 year is there. So 20%. So 1,89,000 into 20% into 3 by 12. 9,450. 4,43,000 into 20%. 88,600. 1,20,000 into 20% into 10 by 12. This is 20,000. And 2,56,000 into 20% into 9 by 12. 38,400. So 9,450 plus 88,600 plus 20,000. 1,56,450. Closing WDB. This is dash. 443 minus 88,6.6. 354,400. Retain. Why dash? Because it is sold. 1 lakh. And 2,56,000 minus 38,400. 2,17,600. 354.4 plus 100. 6,72,000. And what about book value? What is the book value? 1,89,000. 179,550. What is the selling price? Selling price is 1,75,000. Therefore, loss 4,550. Questions, answers. Depreciation. Depreciation is equal to 156
450. Roman 2. Book value 6,72,000. Loss 4550. 8 minute 17 seconds. 8 minute or 9 minute you can take. One more time. See beta, what I have done? 6,32,000. 6,32,000. I have bifurcated in two parts. 189 because 189 is sold and retained. 189 is a book value. 189 is a book value. So sold and retained. 4,43,000. Simple. So 682 का breakup I got. Then new machine I acquired on 1,20,000 on 1st June. On 1st June. 1,20,000. So 1st June to 31st March is a depreciation. And exchange with a new machine of 2,56,000 on 1st July to 31st March. Then beta, this machine I sold on 1st July. So only 3 months ka depreciation for sold part of machine 1. And retained part is 12 months. Okay. And depreciation we calculated and we wrote the answer. So book value. After that book value, you get 189 minus 9450. Selling price is 1,75,000. So I'm in loss. 4550. So this is how you have to calculate it. Very simple. Any difficulty? Raise your hand. Any difficulty in understanding? मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व बेटा. मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. लिखो टाइप 3. टाइप 3. सो इधर 8 मिनट्स हो गए. ऊपर शायद से 6 मिनट्स थे. 6 मिनट दोनों को भी. 6 to 7 minutes. I think 7 minutes. टाइप 3. हाँ. बेटा दिस वॉन्ट हैपन. ये टोटल नहीं लेना है. डोंट टेक हॉरिजॉन्टल टोटल, वर्टिकल टोटल. टेक हॉरिजॉन्टल टोटल because 6,32,000 includes sold part also. Rohan, sold part also. Okay. So we won't take vertical total but only retain asset. You can write over here only retain asset. Rohan, understood beta? This is a basic best calculation beta, easiest calculation for solving this type of questions. Type 3, 3 machines, and first machine part sold, part retain. Part sold, part retain. ठीक है. तो exactly 8 minutes are there. Or same questions they ask you. टाइप 3 का in May 23. चलो May 23 को सेम क्वेश्चन इज आस्क. यू डू इट बेटा. प्रैक्टिस करो. चलो इसका फटाक से. चलो स्टार्ट. 9 minutes आई एम गिविंग यू. चलो डू इट फास्ट बेटा. 9 minutes.
एवरीवन विल डू सेम क्वेश्चन बेटा। चलो इधर के इधर ही करो फटाक से, आईएमपी क्वेश्चन है। इफ यू गॉट द रॉन्ग आंसर विल डू दैट। Write all three answers.
बस हो गया टाइम। यस, व्हाट इज द आंसर? वेनी मेनी ऑफ यू हैव रिटर्न, वाह 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 वाह। हाँ बेटा प्रियंका, जो भी है वो उतना ही देना पड़ता है। मैं बोलता हूँ एक बार आपको आंसर्स। बेटा इफ यू वांट आंसर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में इधर मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आंसर, प्रियंका क्या हुआ है बेटा आज? सभी आंसर्स गलत आ रहे हैं आपके। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो बराबर आया आपका, लॉस भी बराबर आया, पर डेप्रिसिएशन, अरे ये भी बराबर आया, ईशान का बराबर आया ये। प्रियंका का डेप्रिसिएशन क्यों गलत आया फिर? डेप्रिसिएशन तो 784, 375, बाकी तो नहीं नहीं नहीं, पूरा ही गलत हो गया है, पूरा ही गलत हो गया है। ईशान का सही आया। आ, सबसे तेज आंसर ईशान ने दिया था। विशाल भाई का भी आंसर करेक्ट है। रोहन का आंसर, अभी रोहन ने आंसर ही नहीं भेजे, वो रोहन बोल रहा है आप ही कैलकुलेट कर लो। मुझे इतना टाइम नहीं है लाइफ में, आप ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, उसने ही लिख दिया, मैं नहीं करूंगा। रोहन के अभी भी बेटा गलतियां हो रही है। चिरंदीप सही आया, प्रियांशी का भी सही आया, एंड सौम्या का भी सही आया, स्नेहा का करेक्ट है। वेरी गुड। स्नेहा ने दो ही आंसर भेजे, अमन ने सिर्फ डन भेज दिया। हाँ बेटा, डिस्पोज ऑफ करने के बाद क्या कर रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है प्रियंका आज। पूरे इसमें एक आंसर बराबर आया है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू आर सिंसियर, बट क्या ये सिली मिस्टेक से थोड़ी अपन पास होंगे? बहुत सिली मिस्टेक्स कर रही है प्रियांशी। ये सही आंसर है, बाकी बच्चे बेटा प्रियांशी आई थिंक आपका ही गलत हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सही आंसर है ना, एक बार चेक कीजिए कोई डिफिकल्ट गलत फिगर कॉपी हुई है या कुछ भी। अदर स्टूडेंट्स, सेम आंसर? ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लगे तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू। एक ही मिनट, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पूरा स्टैंडर्ड खत्म करके ही छोड़ने वाला हूँ। क्वेश्चन 4। From the following information, state the amount to be capitalized as per AS 10. 5 lakhs routine repairs, ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 1 lakh फॉर पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीन, एंड 10 lakhs, तो ये दोनों P&L में जाएंगे।
and 10 lakhs will be capitalized. So ये तो मैं बोलूंगा इसी क्वेश्चन का पार्ट है. टाइप 1 क्वेश्चन 4 ऐड कर दो उसमें. क्वेश्चन 4 एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दो. 5 हो गया ना, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 11 हो गया, 13 हो गया. चलो, तो ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, पकड़ो, टाइप 1 का ही. नेक्स्ट, टाइप टाइप 3 होगा ना. टाइप 4 रीएस्टिमेट. रीएस्टिमेट. टाइप 4 इज रीएस्टिमेट. चलो, स्टार्ट. A machine with a useful life of 6 years was to be purchased on 1st April 2012. Depreciation was to be provided first 3 years, residual value 10% of the cost. In the beginning of the 4th year, remaining life 4 years and residual value is 5% of the original cost. The accountant recalculated the revised depreciation historically and charged it to P&L. What is the depreciation for the 4th year? Write down answer. Solution 4. Sorry, solution number 6. Calculation of depreciation for year 4. Serial number, particulars, computation, rupees. 1. Cost given 1,50,000. Correct? Roman 2. Depreciation for 3 years. 1 minus 10% divided by 6 years into 3 years. 67,500. WDV. 82,500. Roman 4. Roman 4. Depreciation for 4th year. Roman 3 minus 5% of original cost 1,50,000 divided by 4 years. 1,50,000 into 5%, 82,500 divided by 4, 18,750.
हो गया बेटा, 3 मिनट 20 सेकंड, फटाक से हो गया। डिफिकल्ट था, इजी था, इजी था, बहुत ही इजी था। 4 मिनट्स लिख दो साइड में, 4 मिनट्स। और कोई क्वेश्चन है ऐसा? और कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलो, रीएस्टिमेट हो गया। अभी रिवैल्यूएशन, टाइप नंबर 5, टाइप 5, रिवैल्यूएशन एंड रीएस्टिमेशन, रिवैल्यूएशन एंड रीएस्टिमेशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन एंड रीएस्टिमेशन देख लीजिए। हेमा लिमिटेड परचेस, अरे सॉरी, टाइमिंग। हेमा लिमिटेड परचेस अ मशीनरी ऑफ 15 lakhs. The company charged straight line of depreciation 15 years and residual value 3 lakhs. At the beginning of the fourth year, the company, by way of systematic evaluation, revalued the machinery upward by 20% and re-estimated useful life of 7 years. And scrap value is nil. The increase in the net book value is directly charged to revaluation reserve. Depreciation was charged to the profit and loss account later on. Later on, depreciation is charged to profit and loss account. And at the end of the 8th year, the company decided to dispose of the machine. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा P&L में चार्ज किया है. सो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? ठीक है, सॉल्यूशन 7, serial number, particulars, very simple. We'll do it in very simple way. Original, revaluation and total. Roman 1, cost. What is the cost? 15 lakhs. Same. Depreciation for at the beginning of the fourth year means 3 years. 1 minus residual value 3 lakhs. Residual value is 3 lakhs. Divided by life 15 years. 3 years. 12 लाख, 2,40,000. Roman 3, WDV at the beginning of fourth year. 12,60,000. 12,60,000. Revaluation. 20% into Roman 3. 2,52,000. Revalued amount 12,60,000. 2,52,000.
15,12,000. Depreciation. Depreciation for fourth year. ठीक है. Now depreciation we are not charging to revaluation account but directly P&L में. 15,12,000 minus 0 divided by 7 years into after 4 years means at the beginning of 8th year. तो 4, 5, 6, 7 ये 4 years कैसे आए? Year 4 to year 7. Year 4, 5, 6, 7 इसलिए depreciation of 4 years. For 4 years नहीं, depreciation of 4 years. Depreciation of 4 years. 15,12,000 divided by 7 into 4. 8,64,000. We won't do bifurcation of this because revaluation reserve is not going to cancel. पूरा का पूरा transfer to P&L है. Is given specifically. Sometimes they may give you depreciation part on revaluation. Company policy may charge to revaluation reserve account. Next one. एक मॉड्यूल में था ऐसा. Book value. 15,12,000 minus 864. 6,48,000. Okay. 6,48,000 is a book value. Now, selling price 2 lakhs. तो लॉस कितना हुआ? 4,48,000. Loss is 4,48,000 and full revaluation account revaluation reserve transferred to general reserve 2,52,000 and lost transferred to P&L 4,48,000. 7 minutes. 7 minutes. See, company ने later part also charge to P&L. तो ये आंसर होना चाहिए. ये मॉड्यूल से अलग क्वेश्चन था. Here you have charged revaluation part also depreciation to P&L. और एक क्वेश्चन है शायद से. One more question is there where they have written this extra depreciation is charged to रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो आप ये चार्ट को कंटिन्यू करते थे. ओके. नाउ दे हैव गिवन इट ट्रांसफर टू P&L. एक्स्ट्रा जो है तो ये ध्यान में रखना. ओवर. गॉट द कॉन्सेप्ट. हाँ, इंपेयरमेंट में था. इट वॉज इन इंपेयरमेंट. हाँ, और यदि सपोज इफ इन द सेम क्वेश्चन दे हैव गिवन कि इट इज नॉट extra depreciation is company policy to charge it to revaluation reserve. Okay, तो your answer will be ये आंसर आता था. फिर आपका आंसर ये आता था. You note down this answer also. If excess depreciation charged to revaluation reserve account,
depreciation debited to, if excess depreciation debited to revaluation reserve account. And this is the answer if excess depreciation debited to पी एंड एल अकाउंट, जो पूछा ही है, तो ये आंसर है। दोनों आंसर लिख लो। यू शुड नो बोथ आंसर्स। ये नॉट आस्क, बट यू शुड नो द आंसर। ये नॉट आस्क का बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं। इधर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है, स्टार्टिंग में उन्होंने बुक वैल्यू पे कंटिन्यू किया, देन रिवैल्यूएशन एंड रीएस्टिमेशन हुआ, और रिवैल्यूएशन होने के बाद डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा उन्होंने किधर चार्ज किया, पी एंड एल में। तो पी एंड एल में चार्ज किया, तो रिवैल्यूएशन कॉलम जो है ना, उसमें आगे कंटिन्यूएशन में कुछ भी नहीं होगा, ये आंसर रहेगा। और लॉस पी एंड एल के डेबिट में 448 जाएगा, और पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होएगा। आया समझ में? पर यदि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इफ एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, तो आपका आंसर ये रहेगा। ओके, एक्चुअली ये करेक्ट आंसर है, इफ एक्सेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू पी एंड एल। पर ये भी आंसर रहने देना, इफ एक्सेस डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। हाँ, ये नहीं 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 नहीं, ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ये करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, ये करेक्ट सॉल्यूशन है। हाँ, वो नहीं, उन्होंने दिया है स्ट्रेट कि लेटर ऑन चार्ज टू पी एंड एल, स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। तो उन्होंने यदि आपको 2016 में ये आंसर दिया होगा तो वो गलत है। ये कब होगा, इफ देयर पॉलिसी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पर आप, ये मेन आंसर है, और ये आंसर आप ऊपर ये हेडिंग लिखना, नॉट आस्क, पर ये हेडिंग है, समझा? साइड में ही दिया हुआ है S10 में। 10 नंबर का क्वेश्चन बेटा, हो गए, दो क्वेश्चंस बाकी है, दो क्वेश्चंस बाकी है बेटा, हो गया बस। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईच एसेट, मशीनरी 10 lakhs, रेसिडुअल वैल्यू 5 years, बेस्ड ऑन 2015 प्राइसेस इज 10 lakhs। देखिए, अभी आंसर में बता देता हूं, यह है आपका टाइप 6, टाइप 6 डेप्रिसिएशन, टाइप 6 डेप्रिसिएशन। 10 लाख की मशीनरी खरीदी, रेसिडुअल वैल्यू 10 lakhs, लाइफ 5 years, जीरो डेप्रिसिएशन। लैंड नो डेप्रिसिएशन, मशीनरी कंस्ट्रक्टेड 5 lakhs, but company does not be using, no beta, put to use is important, 5 lakhs divided by 10 years directly, put to use is important, sorry, ready to use is important, put to use is not important, sorry, ready to use is important। एंड मशीनरी 1 April 17 को 50,000, 5 years लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, तो पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइड बाय 5 years इंटू 2 years, तो ये हो जाएगा 20,000, तो बुक वैल्यू इज 30,000, एंड 30,000 के बाद दे हैव डिसाइडेड फर्दर ओनली 2 years, तो ये 15,000। वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन इज आस्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो यू कैन डू इट बाय योर ओन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लीजिए। हो गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
डेप्रिसिएशन, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है। ये देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग, टाइप नंबर 6, टाइप 6 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली आसान था। XYZ लिमिटेड given you the following information, carrying amount 2,16,000. On this date the property was revalued 1,90,000. The balance on the revaluation surplus relating to previous gain, मतलब अभी देखो asset value goes down, तो 216 minus 190, तो 26,000 से asset value goes down. Now out of this first you will debit रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहले उसको खत्म कर दोगे एंड देन बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को कितना डेबिट आएगा? 20,000 एंड बैलेंस 6,000 विल बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ओके, सो योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री विल बी यस 20,000 बैलेंस 6,000 चार्ज टू पी एंड एल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये टाइप नंबर 6 और ये टाइप नंबर 7 रखता हूं एक ही क्वेश्चन में, टाइप 7। टाइप 6 ये लिखते हैं, सॉरी टाइप 7 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना। इफ प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन एंड देन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन लॉस। क्वेश्चन 12(1). If previous revaluation gain and then subsequent revaluation loss, तो पहले गेन को कैंसल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल। एन एसेट ओरिजिनली कॉस्ट 76,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 62,000। मतलब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसल करना है तो गिव डेबिट, कैश को डेबिट, एसेट को क्रेडिट बिकॉज कैंसल करना है, बैलेंसिंग फिगर लॉस 62,000, 4,000, 10,000 एंड 76,000। तो लॉस ऑन सेल, तो एडी कैंसल करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड बैलेंसिंग फिगर इज लॉस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री अकाउंटिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो उसको डेबिट दीजिए। ये ऑलरेडी किया हुआ है तो आई डोंट थिंक कि ये दिक्कत है आपको। सो दिस इज अ लास्ट टाइप नंबर 7 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री। सो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये भी आप खुद से एक बार देख लीजिए आज। यस, सो ऑल 7 टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड। अलग अलग क्वेश्चंस थे, टाइप वाइज लिख के दिया हुआ है। एंड प्रियंका प्रॉमिस किया है आज प्रियंका ने कि मैं और एक दो स्टूडेंट्स लिख दो, क्योंकि आज प्रियंका बहुत गलत आंसर दे रही है, फर्स्ट टाइम हुआ ये, आई डोंट नो व्हाई। यस, सो ये था हमारा टोटल 7 में, हाँ 7 टाइप्स ऑफ S10। यस आस्था जी, यस बेटा, सर यस गुड मॉर्निंग बेटा, सर AS13 में एक डाउट है बोलिए। सर। अगर हम लॉन्ग टर्म को करंट में रिक्लासिफाई करते हैं तो अगर कॉस्ट लॉन्ग टर्म की कम हो रिटर्न डाउन वैल्यू से रिवैल्यूएशन के कारण, तो फिर जो लॉस होगा वो हम P&L में डालेंगे, ऑलरेडी डाला हुआ है P&L में, उसको फिर हम कुछ भी ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे करंट का अगर कम होता है तो वही हम रिवाइज वैल्यू आएगा ना, रिवाइज कॉस्ट वही आएगी ना, बट सर बुक रिवाइज वैल्यू से कॉस्ट, तो नीचे चला जाएगा ना, बुक वैल्यू बुक वैल्यू से तो नीचे चला जाएगा ना, क्योंकि बुक वैल्यू हम हमारी कम है, मतलब हाँ ज्यादा है।
प्रिंसिपल वही होगा, सिर्फ कॉस्ट को रिप्लेस होगा वो वैल्यू से। लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म जाते हो तो क्या प्रिंसिपल है, आज पढ़ के आओ थोड़ा। लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म होता है तो क्या, एंड शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म होता है तो क्या। आज तक एक बार वापस से चार्ट देखना, सिर्फ ओके कॉस्ट की जगह पे रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। ओके। ओके सर। सर AS17 में भी था एक डाउट। हाँ जी बोलिए। सर अगर जो लोन है इज टेकन फॉर परचेजिंग सेगमेंट एसेट, और if we have taken segment asset on lease, then we have to show that segment asset if taken on finance lease and not on operating, or we have taken it on loan, मतलब किसी पर भी लिया है फाइनेंस या फिर लोन पर लिया है, तो we have to show that segment liability, लोन जो हमने लिया एंड इंटरेस्ट accrued and segment। स्पेसिफिकली लिया होगा तो फिर दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली इट शुड नॉट बी शो, अपन ऐसे सेगमेंट के लिए नहीं दिखाते हैं। लोन हम लोग डायरेक्टली आउटसाइड में बताते हैं, बट कंपलसरी सेगमेंट के लिए लिया होगा एंड इट इज प्रूवन होगा। क्या होता है, वो एसेट हर जगह पे यूज होती है, बट स्पेसिफिकली इफ यू आर यूजिंग इट फॉर सेगमेंट देन यू हैव टू शो इट। ओके सर, मतलब सेगमेंट एक्सपेंस लाइबिलिटी ऐसा। उसको और कर मैं दें। नॉर्मली लोन कंपनी को सैंक्शन होता है, सेगमेंट को लोन कभी सैंक्शन नहीं होता है, वो फिर कॉमन आ जाएगा। इसलिए वो नॉर्मली कॉमन में रखते हैं। बट आपका सेगमेंट में सैंक्शन होगा तो फिर ले लीजिए, फिर आपने वैसे बताए रहेंगे तो। सेगमेंट को थोड़ी कोई लोन देता है ऐसा। अभी मैं क्लासेस के लिए लोन ले रहा हूँ या मैं पर्सनल के लिए ले रहा हूँ, तो संकेत शाह को लोन दिया पर्सनल लोन, पर क्लासेस के लिए दिया, इसके लिए दिया, ये नहीं होता है ना। मैं कहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ ना वो लोन। ओके सर। सर जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है उसका हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जैसे डिस्क्लोजर में मैंने पढ़ा था तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, तो वो अलग यस, से बताया होता अलग है। से बताना पड़ता है इम्पेयरमेंट लॉस। ओके सर। सर अगर जो केएमपी है अगर वो दो एंटरप्राइजेस में कॉमन होता है तो वो रिलेटेड पार्टीज होती है, लेकिन अगर डायरेक्टर कॉमन है तो वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगी। हाँ, केएमपी का होल्ड होता है ना उसके ऊपर, डायरेक्टर का होल्ड होगा जरूरी नहीं है ना। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर दो कंपनीज है तो वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगी, केएमपी कंपनी। केएमपी दोनों कंपनी में रहेगा तो, पर वैसा होता नहीं है। एक कंपनी में एक ही मैनेजर होता है नॉर्मली, दो जगह पे की मैनेजर नहीं होगा, डायरेक्टर ही होता है वो। सर लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था उसका, की की का। मैनेजर मतलब क्या, वो सभी एक्टिविटीज खुद चला रहा है दोनों कंपनी का, तो फिर दोनों कंपनी एक रिलेटेड हुई। अभी डायरेक्टर का काम क्या है, जस्ट जाके एक्टिविटीज में ध्यान देना, पर वो उनको कंट्रोल नहीं करता है। डायरेक्टर का मीनिंग समझ लो, डायरेक्टर एंड की मैनेजर में फर्क है। मैं डायरेक्टर हूं, पर मैं वो पार्टीज में, मैं वो कंपनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता हूं। मेरे 3 घर है समझो, और हर घर में जाके, मेरे 3 बेटे हैं, मैं हर घर में जाके कंट्रोल कर रहा हूँ तीनों बेटों को। तो मैं क्या हुआ, मैं की मैनेजर हुआ, पर मेरे तीनों बेटों को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं वहां पे जाता हूँ, बैठता हूँ, क्या चल रहा है बेटा, बेटा ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, तीनों बेटे अलग अलग डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं वहां पे की मैनेजर हूँ या डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर। हाँ, तो वो केस में ये अभी कंपनी समझो, 3 बेटे मतलब कंपनी समझो। तो कंपनी का की मैनेजर में नहीं हूं, मैं जस्ट वो घर में जाता हूं। इसका मतलब मैं ये घर का वो घर में नहीं बताता, ये घर का उसको, ये पहले घर का दूसरे घर में नहीं बताता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, वो मुझे इज्जत दे रहे क्योंकि सिर्फ मैं उनका पापा हूं। आया समझ में। तो मैं सपोज सिर्फ डायरेक्टर हूं, पर मैं उनके घर को नहीं मैनेज कर रहा हूं, वही लोग मैनेज कर रहे हैं, तो वो फिर रिलेटेड नहीं होगा ना। मैं ये समझ लो, दो कंपनीज में मैं, दोनों अपने अपने अलग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। लेकिन केएमपी और कंपनी रिलेटेड होगी और डायरेक्टर और कंपनी भी रिलेटेड होगी, मतलब आपस में वो रिलेटेड होंगी। नहीं होगी ना, डायरेक्टर कॉमन डायरेक्टर है तो। कॉमन डायरेक्टर कंट्रोल थोड़ी करता है कंपनीज को। फिर दो कंपनीज रिलेटेड नहीं होंगी, लेकिन डायरेक्टर और कंपनी का डायरेक्टर, जो हाँ वो तो रिलेटिव में आएगा ही ना, रिलेटिव के डेफिनेशन में डायरेक्टर तो आता ही है ना, भले वो कंट्रोल नहीं करता होगा तो भी। ओके सर, थैंक ओके। यू सर। यस। यस अमन, बोलिए बेटा। नो नो सर, नो डाउट्स, बस यही पूछना था कि अगले सेशन में अपन AS1 और AS19 के PYQs हाँ, करते हैं ना। एस 1 करते हैं, एस 19 या एस 28, दोनों में से एक कर लेंगे। एस 1 हम लोग एक 20 मिनट में खत्म करेंगे एंड विल ट्राई टू कवर बोथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा वी ओके हैव शॉर्ट ऑफ टाइम,
सो नहीं तो मैंने पूरे एस का ही करवाया रहता, बट अभी आपको कुछ एस का खुद से करना पड़ेगा फिर। ओके यू सर। अंडरस्टूड, ये टाइप्स कैसे सर निकालते हैं वो भी समझ में आया होगा अभी आपको। यस सर, गॉट इट यस। एवरीथिंग। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो और 2-3 लेक्चर मिले रहते तो मैंने पूरे टॉपिक्स पूरे के पूरे एस का ही पास्ट क्वेश्चन ले लिया रहता। ओके। ओके सर, थैंक यू। यस। प्रियंका, प्रियांशी। यस सर। सर वो जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना, एक बार उसका आप स्लाइड निकालिए ना आंसर का प्लीज। यस सर, इसमें सर ये था कि जो मशीन फर्स्ट का जो सोल्ड वैल्यू का डब्ल्यू आएगा ना, इट विल बी निल सर, इसीलिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था मुझसे। क्यों नील? सर वो तो सोल्ड हो गया ना, तो सर उसका डब्ल्यू कैसे रहेगा मतलब? अच्छा। 936 ओके विल ओके बी। ओके। यस सर, इसीलिए वो मिस्टेक हो रहा था। किसका? टोटल कैलकुलेशन। दिस इन स्लाइड दिस इज करेक्ट सर, मेरा वो मिस्टेक हो रहा था, मैंने भी सेम किया था अच्छा, कि मैंने हाँ निल हाँ, नहीं लिया था। समझा मुझे। यस। ये थोड़ा सा स्लाइड गलत हुआ है। हाँ यस। 13 नंबर भी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी डैश लेके नीचे बुक वैल्यू लिखना था, जैसे आपने इसमें देखो, आपने इसमें बराबर किया है। कौन से क्वेश्चन में? नहीं, सर थर्ड ये वाला। भी, इसमें भी डैश और बुक वैल्यू नीचे लो, सिर्फ ये इनर कैलकुलेशन बताने। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मत लेना, ये जो वैल्यू है नीचे ले लेना, बुक वैल्यू इधर इधर लिखा, ये देखो ऐसे करो, ऐसे बताओ, ठीक है? यस। हाँ, हो गया स्टैंडर्ड, खत्म कर दो अभी, ठीक है? हाँ, समझ, बाजू में आंसर्स लिखे कुछ कुछ, समझ आंसर्स, यस। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आई होप यू एंजॉयड इट। अमन? यस बेटा, अंडरस्टूड अच्छे से आज का सेशन? यस सर, मैंने थोड़ा सा पहले से भी इलस्ट्रेशंस गो थ्रू कर रखा था, और अभी मैंने आपके साथ ही सारे क्वेश्चन सब्सिक्वेंट सॉल्व किए, मुझे मेरा पूरा हो गया। अच्छा, तो 10 इजी था, अभी 19 आपको चाहिए, एंड 28 आई विल थिंक कि देख लेता हूं मैं। यस ओके। अजित सर, ओके, अजित सर को कुछ बोलना था शायद से। यस सर। सर बोले। जितने भी आपने अभी तक टॉपिक्स लिए हैं ना, हाँ। जिनके भी स्क्रीनशॉट दिया उनकी ना एक पीडीएफ बना के मैं दे दिया, मैं पोर्टल पे भी अपलोड करना है उसको। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है है। ना, चैप्टर वाइज जितने भी आपने लिए हैं वो बना के दे दीजिए सर प्लीज। हाँ, पास क्वेश्चंस ना? क्वेश्चंस नहीं सर, नोट्स। नोट्स तो अपलोड, ठीक है सर, दे देता हूं मैं वो भी। यस सर। यस, ठीक है, थैंक यू। चलो, यस, निसक जी बंद कर दीजिए।